ये सभी मोल्डिंग मशीन्स के अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो सभी पार्ट्स हैं। ये आई थिंक इनको स्क्रू बैरल बोला जाता है, स्क्रू बोला जाता है। ये पाइप एक्सट्रूजन प्लांट है, पाइप को जो बनाया जाता है एक्सट्रूड करके, जो आपने देखा होगा रोलिंग पाइप। इस तरीके के पार्ट्स से ना प्लास्टिक को आपस में मर्ज करके फिर प्लास्टिक को मतलब हीट के बाद पाइप में थ्रू एक्सट्रूड किया जाता है। ये सभी चीज़ें मैं देखता हूँ, कई बार हम लोग बड़े मतलब हैरान होते हैं कि बना कैसे होगा, तो वो ये सभी मशीनरी उसमें यूज़ होती है।